So until now we have been discussing cloning vectors, but there are certain vectors which are specialized to maximize protein expression. Hence they are known as expression vectors. Now, what do they have different from a cloning vector, that they are able to pump out protein in high quantity? Let's see that what structural features are required to basically translate proteins. So if you look at a plasmid which is optimized for protein expression, it has antibiotic resistance and origin of replication similar to any cloning vector, but then it has a promoter and an operator and a ribosome binding site, and ATG we have already discussed is the start codon, and then your gene, and then a stop codon, and then obviously a termination sequence. So basically, ultimately when you have all these things, then you can make an expression vector which will produce your protein. Ribosome binding site. So basically you need this binding site, as the name suggests, so that a ribosome can bind on the mRNA obviously, but you need to code it in the DNA so that it has on the mRNA. Now it is around 5 to 10 nucleotides before the start codon, so that there is enough space, and then ultimately 5' to 3' translation can occur. And we see that there are certain codons which are preferable for E. coli. For example, in natural environment, E. coli uses 77% of the times it uses ATG, 14% of the times it uses GTG, and 8% of the times it uses TTG. And stop codons, the preferable one is TAG or TAA, but you can also use TGA. If you look at the promoters, there are certain promoters. Host promoters, there are 25,000 in the entire genome of E. coli K12 strain. When we are looking at the host promoters, it's not necessary that we only look at the promoters which are present on the plasmid. आप whole genome में देख रहे हैं कि कितने promoters मौजूद हैं, and 2500 promoters आपको E. coli के genome में मिलते हैं. Most frequently used promoters are PLAC, PTAC, PTRC, PBAD and RABAD. जो PLAC है, it's a very weakly regulated promoter. It can easily be induced by low level of IPTG. It is suitable for expression of gene products at very low intracellular level. Comparatively expensive induction because IPTG is expensive. इसी तरीके से जो PTAC है, PTRC है, it's moderately high, it's a bit expensive, there is a high basal level, लेकिन ये आपको थोड़ी सी इसमें IPTG high quantity के अंदर यूज करना पड़ता है. But all of these are lower than T7 system. I will actually come to the T7 system later in this topic. इसी तरीके से you have PBAD, which is from उसका जो level of expression है वो low to high है, and it is induced by a sugar known as levoarabinose. लेकिन इसका एक interesting advantage है, because you can fine tune the expression level in a dose dependent manner. If you keep increasing the arabinose quantity, then it will keep, like there is some region जिसके अंदर आपके पास direct correlation है कि जब आप अरेबिनोज की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, प्रोटीन बनने की, प्रोटीन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है. इसी तरीके से रैमनोज, विच इज अनदर शुगर, जो रॉ को आप लो टू हाई लेवल के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी टाइटली रेगुलेटेड प्रोमोटर. जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि देयर आर सम टाइटली रेगुलेटेड प्रोमोटर्स एंड देयर आर सम स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्रोमोटर्स, तो उसके अंदर एक चीज आपको मद्देनजर रखनी है कि कोई भी प्रोमोटर हो वो कुछ ना कुछ बेसल लेवल ऑफ प्रोटीन बनने देता है. एंड समटाइम्स वी नीड वेरी टाइटली रेगुलेटेड प्रोमोटर, क्योंकि आप अपने, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, आप एक ऐसी कैस्केड में काम करें जो आप किक स्टार्ट नहीं होने देना चाहते. आप अगर वक्त से पहले प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाए तो वो आपके पूरे सिस्टम को खराब कर सकती है. तो बेसिकली इन बायोटेक्नोलॉजी now we are moving to this stage
जहां पर हम स्टैंडर्डाइज प्रोमोटर्स की तरफ जा रहे हैं कि इफ वी कैन हैव अ स्टैंडर्डाइज प्रोमोटर इन अ स्टैंडर्ड सेल लाइन, देन वी कैन अल्टीमेटली से कि आपके पास यानी कि वी कैन अल्टीमेटली गो टू दैट इंजीनियरिंग लेवल। जिस तरह हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि 1 मोल ऑफ सॉल्ट ले लिया और 1 मोल किसी और फलां चीज का ले लिया और आपके पास 2 मोल ये बन जाएगा, इसी तरीके से हम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में भी ये एफिशिएंसी अचीव करना चाहते हैं कि इस प्रोमोटर का एक्सप्रेशन लेवल इतना है, इस स्ट्रेन में इस प्रोमोटर का इतना है। ओके, बट द प्रोमोटर्स विच कम फ्रॉम फेजेस, they are much more efficient in terms of their expression. These are the types of phages. Most famous out of these is a T7 promoter. Level of expression is very high. It utilizes T7 RNA polymerase, which we'll see in the next slide that how it does it. इसी तरह T5 है, which is also level of expression is very high, but it utilizes E. coli RNA polymerase. And then PL is moderately high, but there is a temperature shift. There is a temperature sensitive host required. There is very less likelihood of leaky uninduced expression. ये promoter बहुत अच्छा है क्योंकि ये leaky expression नहीं जाने देता, और basal level and high basal level by the temperatures below 30 degrees Celsius. You don't need an inducer for it. Basically आप temperature increase करते हैं, and that's how ultimately you induce the protein expression. Now let's look at how T7 promoter works. So T7 promoter mein what happens ke T7 polymerase is coded on the bacterial chromosome, which basically make T7 polymerase, lekin it acts on the part of the promoter which is on the plasmid, which ultimately leads to the expression of the target. Let's see it here. It's more clearly given कि जब आपका जो ई कोलाई जीनोम है, वो जो मैं आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, जब हम आईपीटीजी डालेंगे तो वो उसके ऊपर से लैक रिप्रेसर रिमूव करेगा और अल्टीमेटली लैक प्रोमोटर विल स्टार्ट मेकिंग ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज, और उसके साथ साथ जो T7 जीन है इट विल गिव राइज टू T7 आरएनए पॉलीमरेज. दैट T7 आरएनए पॉलीमरेज वुड बाइंड to T7 promoter on the target gene, and that's how ultimately आप लोगों ने एक डबल कंट्रोल लगा दिया है. ये बेसिकली आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये बेचारा ऐसा शौहर है जिसको बीवी से भी मार पड़ती है, सास से भी और उसकी अपनी माँ से भी. आपने इतने ज्यादा इसके ऊपर, इसका इतना ज्यादा आपने इस पर रेगुलेटरी कंट्रोल रख दिया है. लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर्स में आपको एक और चीज भी देखनी है. दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम बिकॉज इन इट यू कैन सी कि आपके पास एक लैक ऑपरेटर है, आपके पास एक ऑब्वियसली स्टार्ट कोडॉन है, फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, फिर MYC एपिटोप है. MYC एपिटोप आपको बेसिकली डिटेक्शन में हेल्प करता है, और इसी तरह हिस्टैग है जो आपको प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है. बेसिकली व्हाट इज एपिटोप? एपिटोप इज द रीजन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एंटीबॉडी. अगर आपने किस तरह का एपिटोप अपनी प्रोटीन के साथ लगाया हुआ है, सो व्हेन यू विल रन अ जेल यू विल सी कि आपके पास काफी सारे बैंड्स आ जाएंगे. अभी आपने प्रोटीन प्यूरिफाई नहीं की, लेकिन इफ यू वांट टू डिटेक्ट कि आपकी उसके अंदर प्रोटीन एक्सप्रेस हुई है या नहीं हुई, देन यू कैन बेसिकली यूज एंटीबॉडीज अगेंस्ट योर पर्टिकुलर फ्रेगमेंट, क्योंकि उसके अंदर एक MYC एपिटोप है. तो आप एंटी MYC एंटीबॉडीज यूज करके आप इसके ऊपर एक वेस्टर्न रन करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू सी वेदर योर प्रोटीन हैज बीन एक्सप्रेस्ड और नॉट. I'm not going into the detail that how we are going to do Western blotting and how do you run a gel, because there is a separate techniques course which you can find on university website.